बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RFI टॉक के साथ मैं हूं नुसरत मिर्ज़ा। आज का प्रोग्राम में हम लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवाई साहब, एडवाइज़र डेवलपमेंट नेशनल कमांड अथॉरिटी ने जो ख़िताब किया है 21 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट में उनकी कलीदी ख़िताब को पेश करने जा रहे हैं, जो कि उर्दू में तर्जुमा करके हम पेश कर रहे हैं। लेकिन कुछ हिस्सा उनका जो बहुत अहम हिस्सा है वो हम आपको अंग्रेज़ी में भी सुना देंगे, उसका उर्दू में भी तर्जुमा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवाई ने रूसी मेहमानों को खुश आमदीद करते हुए कहा, At the outset, I would like to extend a very warm welcome to our Russian guests for being with us this morning. We are grateful that you find the time from your very busy schedules to be in Pakistan. We are honored by your presence. I hope that besides the serious business of participating in the two-day conference, SVI will give you ample opportunity to see and enjoy some parts of Pakistan, a bit of Pakistani culture, a touch of life in Pakistan, and lots of Pakistani hospitality and our cuisine. I'm sure that you will carry with you happy memories of your stay in Pakistan, and you are welcome to come again and again. कॉन्फ्रेंस के मकासद का जिक्र करते हुए दुनिया की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पाक रूस ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए जहाँ उन्होंने यूक्रेन फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात का जिक्र किया, वहीं उन्होंने क्वाड, अकूस, SCO और ब्रिक्स जैसी तंजीमों की तश्कील को भी ज़ेर बहस लाए। डी-डॉलराइजेशन ड्राइव और जो बाइडन और शी चिंग के दरमियान में मौजूद तनाव को कमी और तमाम तरह अवामिल के नतीजे में ख़त्े में पड़ने वाले असरात के बारे में भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा, The theme of the conference, that is Pakistan-Russia relations amid transforming global order, I think has been well selected, keeping in view the rapidly transforming, rapidly evolving global order. Major global events like the ongoing wars in Ukraine and Palestine, the emergence of important forums like the SCO, BRICS, Quad, and AUKUS, the de-dollarization drive, the recent meeting of President Xi Jinping and President Biden with some melting of ice, to name just a few, are becoming agents of transformation in the emerging global order. Our part of the world's South Asia is invariably affected by these developments, especially ever since President Obama's policy of pivot to Asia took root and started to generate strategic effects in our region. Earlier, the US policies of exceptionalism of giving India a free pass or exemption on trade with the nuclear suppliers group exacerbated Pakistan's security concerns and continues to exert pressure on Pakistan's strategic response options. 70 की दिहाई में पाक रूस ताल्लुकात में बेहतरी आई और इससे पाकिस्तानी तारीख का रोशन बाब भी माना जाता है, क्योंकि इस अरसे में पाकिस्तान स्टील मिल का क़याम अमल में आया। इस बारे में तफसीलात बयान करते हुए उन्होंने कहा, However, in 1972, the Pakistani government revived the relationship once again. This period was symbolized by the construction of the Pakistan steel mill at Karachi by the Soviet Union, and there was cooperation in other areas, including defense as well. I recall the professional excitement when I was a young captain in 1973, recently repatriated after being a prisoner of war for 2 years in India, and my medium regiment artillery was equipped with the Russian 130 millimeter gun. It was Pakistan's longest shooting artillery gun at the time, with a maximum range of around 30 kilometers, and the regiment took much pride in that fact. Also added to the gun were the massive Kraz gun towers and the Gaz jeeps. In the civil sector, the Skoda car became fairly popular. All of these are pleasant memories of a positive Pakistan-Russia relationship, even though the USSR had backed India in the 1971 war. 21वीं सदी के अवाइल में पाक रूस ताल्लुकात ने एक मस्बत मोड़ लिया है, जिससे दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हुए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के SCO के मेंबर बनने में सदर पुतिन के किरदार का जिक्र करते हुए उनका कहना था, The Pakistan-Russia relationship once again took a positive turn in the beginning of this century, and this has been by far the longest period of upturn of bilateral relations. It now appears that there is a genuine desire in both countries to continue moving on this positive curve. And much credit for this certainly goes to President Vladimir Putin for his personal interest and contribution towards the improvement of Pakistan-Russia relations.
It was on President Putin's watch that Pakistan became a member of the SCO with Russian and Chinese support. It was also on his watch that Pakistan has received prompt Russian response whenever it needed to import wheat in periods of food insecurity. More recently, Pakistan has received 2 shipments of oil from Russia, and agreements of more such shipments are underway. And the next critical agreement likely to be finalized in the near future would be for the procurement of LPG from Russia. मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में बाहमी ताल्लुक़ात की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। यानी पाकिस्तान और रूस के दरमियान में बहुत 3-4 मुश्तरका मशक़ें हो चुकी हैं। उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें बाहमी ताल्लुक़ात की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। इस बारे में तफ़सीलात बयान करते हुए उन्होंने कहा The cooperation between the two militaries is also growing, with soldiers from both sides visiting each other's country or undertaking joint training exercises. In 2021 alone, 1,600 Pakistani military personnel visited Russia to participate in various joint exercises. पाकिस्तानी मीडिया में रूस से मुतल्लिक़ हमेशा मस्बत ख़बरों की तशहीर इस बात की गमाज़ है कि पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बहुत मजबूत और अच्छे हैं। इस बारे में उन्होंने मज़ीद कहा And evidence of the growing goodwill for Russia can be judged from the fact that the otherwise boisterous Pakistani media does not run any stories which might project Russia in a negative light. रूस यूक्रेन तनाज़े की शुरुआत से लेकर अब तक पाकिस्तान ने रूस के ख़िलाफ़ मंजूर होने वाली यूएनओ की किसी करारदाद के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, वो सुन लीजिए। Since the start of the Russia-Ukraine conflict, Pakistan has not voted in favor of any UN resolution against Russia, despite international pressure that it has had to endure. The record of the UN voting patterns also shows that Pakistan is among the top countries that have voted in sync with Russia on various international issues, showing the convergence in thinking and policies between the two countries. इस्लामोफोबिया ख़िलाफ़ सदर पुतिन के वादे लाए अमल को सराहते हुए उनका कहना था At the global level, Pakistanis deeply appreciate President Putin's strong stand against Islamophobia and the incidents of desecration of the Holy Quran in some Scandinavian countries. इस मुनक़दा कॉन्फ्रेंस की अहमियत को उजागर करते हुए जनरल खालिद अहमद किदवाई ने कहा कि इसे मज़ीद फ़ोरम के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया और कहा कि ऐसे जो है ऐसी कॉन्फ्रेंसें और होनी चाहिए और जो उनकी ज़बानी आप सुनिए। It is also imperative that the frequency of interactions like this conference, providing greater exchange of ideas, promoting collaborative research projects and discussions between scholars and experts is enhanced in order to provide intellectual support to greater mutual understanding, which in turn will contribute positively towards further strengthening of bilateral relations. पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके पेश नज़र पाकिस्तान की सिक्योरिटी में आने वाले बेहतरी पर रोशनी डालते हुए जनरल खालिद अहमद किदवाई साहब ने जो कहा वो आप खुद अपनी उनकी ज़बानी सुनिए। I am happy to note again that Russia respects Pakistan's sovereignty and strategic autonomy. By the same token, Pakistan does not particularly grudge Russia's long-standing strategic relationships with some countries in our neighborhood. However, we do hope that while providing high-end military hardware to those countries, Russia would very carefully consider the likely repercussions on Pakistan's security and regional stability. पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़ित्ते में अमन का ज़ामिन है और लिहाजा अगर हमारे न्यूक्लियर हथियारों को अमन का हथियार कहा जाए तो बेजा न होगा। उन्होंने कहा जो कुछ उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा वो आपको सुनाते हैं। In military terms, Pakistan's nuclear capability has proven beyond doubt to be a viable strategic solution in providing security through deterrence and satisfactorily addressing Pakistan's long-standing dilemma of relative conventional forces asymmetry with its adversary. Now, because of a robust nuclear weapons capability articulated through the policy of full spectrum deterrence, Pakistan is secure from possible aggression by its larger neighbor. जनरल खालिद अहमद किदवाई साहब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके पेश पाकिस्तान की सिक्योरिटी में आने वाले बेहतरी पर रोशनी डालते हुए जो कुछ कहा वो आपने सुना। इसके बाद में हम जो 2 और नुकात रह गए हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़ित्ते में अमन का ज़ामिन कहा है, वो आपकी खिदमत में आप ब्रेक के बाद पेश करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत होते हैं।